You tell me, frankly, one question to Hmm. the government of India. Till yesterday and even now, the only narrative which you have built about Kashmir, that is around terrorism. Hmm. We have called terrorism, normalcy, and Hmm. all that. Hmm. So, who was the machine of terrorism in Jammu and Kashmir for the last 35 Hmm. years? You have to identify it. Hmm. So, the people of Kashmir, the mainstream political parties like National Conference, PDP, Congress, CPM, who have suffered Hmm. huge losses. Hmm. Now, all of a sudden, you are providing some ashirwad to those very people who till yesterday were talking that Constitution of India is something bad for people of Jammu and Kashmir. We are on the campaign trail in Kulgam in South Kashmir with the veteran of Kashmir politics, Mr. Taregami. He is perhaps facing a very unusual competition this time from a Jamaat-e-Islami backed candidate. The Jamaat-e-Islami has been banned by the Modi government in 2019, लेकिन वो candidates back कर रहे हैं. 10 candidates वैली में उन्होंने back किए हैं, and one of those candidates, Sayyar Ahmed Reshi, is contesting against Tarigami ji from here. It's good to see you after a long time. ये बताइए क्या लग रहा है इस बारी चुनाव में कुछ अलग लग रहा है? नहीं, अलग इस लिहाज से कि after 6 years, 2018 से we were, this was the only region without assembly. So we are getting this opportunity after a long time, and with the intervention of Supreme Court or with the intervention raising the voices from different quarters. So that's why it is a celebration for all of us, the people here. Just the fact that the elections are happening. Yes. Now, tell me, this time, as we've been saying, there is actually a kind of mainstreaming of separatists, and you see Jamaat backed candidates, including one against you. What do you make of this? You have been coming here since long. You are one of the senior journalists who know Kashmir much more than many others. You tell me, frankly, one question to the government of India. Till yesterday and even now, the only narrative which you have built about Kashmir, that is around terrorism. We have called terrorism, normalcy, and all that. So, who was the machine of terrorism in Jammu and Kashmir for the last 35 years? You have to identify it. So, the people of Kashmir, the mainstream political parties like National Conference, PDP, Congress, CPM, who have suffered huge losses. Now, all of a sudden, you are providing some ashirwad to those very people who till yesterday were talking that Constitution of India is something bad for people of Jammu and Kashmir. Tarigami ji here is raising an interesting question. He's saying government of India must answer why there is Ashirwad, blessings for those who were against India all these years. He's talking about the Jamaat-e-Islami. For historical context, the last time the Jamaat-e-Islami took part in elections was 1987. उनका कहना है कि वो इलेक्शंस के खिलाफ थे ही नहीं, 1987 फ्री एंड फेयर नहीं था, इसलिए वो खिलाफ हो गए. मैं एक चीज बताऊंगा, क्या महज इसलिए कि 1987 में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए उस इलेक्टोरल प्रोसेस में, लेकिन उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया दिस वाज द प्लेस जहां उनका कैंडिडेट कामयाब हुआ 87 में. यहाँ तो रिगिंग नहीं हुई, यहाँ तो रिगिंग नहीं हुई, यहाँ कुलगाम में इसी सीट पर. जी मुझे ये बताइए, उसके बाद जो इसी गांव में इसी सड़क पर पुल जलाए गए और स्कूल जलाए गए, किन के कहने पर हुआ? और तब और आज ये स्कूल जलाना ताबीर है आज़ादी की? पुल जलाना क्या वो ताबीर है नई खुशहाली का? My point is simple. Jamaat Islami has to explain its conduct for the crimes they have committed against the people of Kashmir, against those youths. So I want to ask you more about this, but first we'll show you where we are standing. We are in Kulgam.
on voting day. You can see Tarigami ji's supporters. We're also sitting at a little shop. उनकी security भी इस तरफ है, कुछ press के लोग भी हैं. And Mr. Tarigami, who is a veteran of politics here, four-time representative from here, is in a very interesting and peculiar contest here. वो बोलते हैं कि सरकार और जमात इस्लामी दोनों एक्सप्लेन करे कि ये नया रिश्ता क्या है, लेकिन ये आपका आरोप है कि सरकार का रिश्ता है. जब मैंने जमात इस्लामी के यहाँ कैंडिडेट से पूछा, उन्होंने कहा पीपल आर इनसिक्योर अबाउट अस, हम बीजेपी की प्रॉक्सी नहीं है, हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं. मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, है ना, और बैंड ऑर्गेनाइजेशन है. कई लोग ऐसे हैं हमारे इलाके के, मैं नाम भी ले लूंगा, जो बंद है इसलिए, या जो उनका वेरिफिकेशन है वो इसलिए रोका गया है, पुलिस वेरिफिकेशन, या नेगेटिव आया है कि उनका संबंध है जमात इस्लामी के साथ. क्वाइट इन रीसेंट पास्ट देयर इज एन एडजेसेंट विलेज कॉल्ड शालीपोरा, वहां का नंबरदार बना, और जब वेरिफिकेशन हुई उसको रोका गया स्टैंप देने से. वजह इसकी ये कि वेरिफिकेशन में आया उसका रिश्तेदार जमात इस्लामी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रहा है. मुझे ये बताइए, डबल स्टैंडर्ड इन पर, जमात इस्लामी पर आज प्रोटेक्शन डिस्पाइट बीइंग ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो कैंडिडेट्स हैं वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अब भी आज भी हम जमात इस्लामी हैं. उनके बयानात पढ़ लीजिए आप, वीडियोस देख लीजिए आप, और ये नवाजिश क्या है सरकार की तरफ. तो आपको क्यों लगता है, why would the government be backing? You are claiming the government is not backing but allowing these candidates from a banned organization to contest openly. Why would the government? They are facilitating as well. My point is, when others, the youth of our area, are being punished because of some association with Jamaat-e-Islami, why they are facilitating this organization? अच्छा, इसका एक जवाब है, सरकार कह सकती है कि इट्स सेपरेटिस्ट को मेन स्ट्रीम में लाना कोई गलत बात तो नहीं. तो मैं कहता हूँ उन बच्चों को क्या कसूर है जिनको आज भी आप सजा दे रहे हैं, जेल में रखा है, किस जुर्म में? मैं तो यही कह रहा हूँ, एक नंबरदार को आप सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज समबडीज एसोसिएशन विद जमात इस्लामी. तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना. अच्छा. और दूसरा इसके अलावा जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ रहा है, क्या उसमें बदलाव आया है? One thing, why don't they tell the people of Jammu and Kashmir the question of self-determination is wrong? Why don't they put this question that our past was wrong and our interpretation, our doings and all that resulted in huge sufferings for the people of Kashmir? What do you make of the Engineer Rashid factor? Engineer Rashid is out on bail, उनका coalition बन गया है जमात इस्लामी के candidates के साथ, उस पे क्या बोलेंगे? Engineer has been engineered. Engineer has been engineered by those who are knowing the social engineering much more than anybody else. And now another point is, आपने कहा कि वो जमात इस्लाम कुनद, यहाँ फारसी में है कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज. कबूतर के साथ उड़ता है और बाज से, कवा से. तो ये ऐसा ही हाल है ना कि हम जिन्स लोग, हम रंग लोग एक तरफ और दूसरे लोग दूसरी तरफ. Are you worried that you might lose because of all these factors? No, I will not lose the battle, even if I lose the contest. But be sure, people are wiser of here. They know me, they know them. यूसुफ तारिगामी का कहना है कि इंजीनियर रशीद has been engineered, जमात इस्लामी has been facilitated. लोग सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है. From the campaign trail with Mr. Tarigami, we wish you all the very best. Good luck. Barkhadat signing off for Mojista.